पृथ्वी हे इथे उपस्थित आहेत आणि तमाम मुंबईतल्या या रंगीत दुनियेतले बरेचसे सितारे या रंगमंचावरती आमच्या या सामन्यासाठी उपलब्ध आहेत. त्याबद्दल मी यूथ क्रीडा मंडळाच्या वतीने या सर्वांचं या रंगमंचावर स्वागत करतोय. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना अथवा व्यवस्थापकाला एक नम्र विनंती आहे की त्याने आपला 12वा खेळाडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवून द्यायचा आहे की जेणेकरून हे धावतं समालोचन तुमच्यापर्यंत आणि लोकांपर्यंत नीट आणि ठीक ऐकवण्यात अतिशय मदत होईल. तर हा जो सामना आहे हा परेलचा म्हणजे राहुल 11 विरुद्ध कलव्याची सध्यांकडे देत. Thank you, Vijay Samant. Well, this is perhaps going to be a very exciting and interesting match between AGRI SENA 11 of Karwa versus RAHUL 11 of Parel. Earlier, matchless 11 registered what seemed to be a convincing victory over RCC Gold Spot when matchless scored 48 for 5 and in reply RCC were 29 for 6. Ashokan has been declared the man of the match for having taken 3 wickets for only 6 runs. AGRI SENA 11 has won the toss and chosen to bat first. आगरी सेनेचा 12वा खेळाडू अजून आमच्या समान कक्षामध्ये आलेला नाही आहे. आगरी सेनेचा 12वा खेळाडू जोपर्यंत आमच्या समान कक्षामध्ये येत नाही तोपर्यंत पंच बाबरेकरांना नम्र विनंती आहे की तो पण सामना थांबवा करायचा. For Rahul 11 will be the man in charge of bowling operations, will send down the first over from the Prahar end, and the 2 openers for AGRI SENA 11. We wait for the 12th man of the AGRI SENA 11 to come into the box to help us to identify the batsmen and give you all the identifications correctly. Signal from umpire Babreka for the scorers to take note that the first ball is about to be bowled. And Rahul 11 are the ones who are fielding. AGRI SENA off the mark. We don't have the names of the 2 batsmen, so we kindly request Chandu and Bharat are the 2 openers. Chandu got off the mark of the very first ball. In fact, Bharat, the left-handed batsman, scored the first run for AGRI SENA 11, and now it's going to be Chandu. Bharat is off the mark. Aslam bowling his first over to Bharat. Whenever the bowler tries to keep the ball well up to the batsman and is giving more air, driving is not that very easy. But this time an easy and a very elegant drive off the front foot by left-handed Bharat to a delivery which was well up to him. And Bharat gets only a single for that effort. And now it's going to be Chandu. Aslam to bowl. Flicked off his toes. Chandu earns a single. He is on 2. And AGRI SENA 11 deciding to make first use of the wicket after winning the toss in the first unfinished over so far. 4
without any separation effected by the bowlers. Aslam, and that delivery is seaming away, keeping low, going outside the off stump onto the back foot. Bharat trying to square cut it, but the ball keeping fairly low. He failed to get on top of that one and was beaten in his attempt. So in the first over, Aslam has conceded 4 runs, and AGRI SENA now in 7 overs, that's in 42 deliveries, will have to knock off the number of runs at a rate at which they have begun rather cautiously. And caution is always the watchword for the openers. Anil Sarang, the tall, lanky, wiry, with his run-up seems that he is going to bowl his medium paces. Yes, he will. And this one has been just nudged away down to backward of point. Both Bharat and Chandu with lot of hurry and worry at the back of their mind. Take a couple. So Chandu is on 4 and the score 6 without loss in the second over of the AGRI SENA's innings, and the first one being bowled by Anil Sarang. The only end from where the bowlers bowl. Without gathering, the keeper and the close-in fielders were expecting and anticipating that would be a direct throw onto the stumps, but the keeper also kept on looking at the stumps. The return from point was not aimed directly at the stumps to break the wickets, and a single to Chandu. He's on 5. Progressively, one has noticed on the second night of this match that unless a bowler is putting in extra effort through his shoulders, whenever you give a lot of air to the ball, it's keeping relatively low, and stroke making is becoming increasingly difficult. That's a no ball declared by the umpire, square leg umpire. But a single off the stroke, and the total is 11 without loss. Anil Sarang, especially when one is playing with a tennis ball and the bowlers trying to extract extra bounce and pace of the wicket, really have to put in hard work behind every delivery. Let's see what further hard work Sarang is going to put in this time, as this one has been flicked away off his toes by the left-handed batsman Bharat down to backward of square. Bharat seemed to have been the tailor-made batsman for such a kind of fight back. RAHUL 11 has very intelligently deployed the fielders. It has been a mixed distribution on the onside, barring close in mid wicket. The rest of the fielders are in the deep, while on the offside, 2 close to the wicket, and the remaining ones have been placed in the deep. So Sarang bowls his completes his first over. After 2 overs, AGRI SENA 11, 12 without loss. Both the openers still keeping the wickets intact, and Anil Sarang gave away 7 runs in the first of the 2 overs he is permitted to bowl in this limited overs match.
restricted to 8 overs contest. Vikrant Khoth is the bowler and Bharat is the batsman. He has a distinct two-eyed stance. That's a good back cut. Will he make the third run rather safely? Yes, since the return was in the direction of the bowler, the distance was longer, the return fell short, and no shortage for Bharat and Chandu to go for the third run. So 3 runs to Bharat. Don't worry. Chandu, like Bharat, seems to have been employing his favorite stroke between point and backward point. He has been playing with his clipped defensive approach. So Chandu at the moment is on 7 and the total 17 without loss. This is the most effective and safe way of getting runs when you open the innings. Not going for the lofted shots, keeping the ball on the ground, placing them effectively and finding the right gap seems to be the motto of Chandu, the batsman, but at the moment it's going to be Bharat who square drives it. Off the second bounce, it goes down to point. Bharat is on 6, the total is 19 without loss. And Khoth now choosing to bowl over the wicket. This one has been steered down to short third man from backward point. Good anticipation, safe return. Chandu takes his score on to 9. Bharat is on 6 and the total 20 without loss. Waiting for that ball to come back into him from outside the off stump, going onto the back foot was Bharat. He just guided it away down to backward point. That single increases the confidence and the determination of left-handed Bharat to pick the flow of runs, to maintain the scoring rate. And after 3 overs, AGRI SENA 11 are 21 for no loss, and Yashwant Chad says that the scoring rate has been 7 runs per over. Quite a good going. Karuna Kotian is the bowler. Must be Karuna and not Karuna. Karuna always seems to be the girl's name. Yes, Vijay? He must be Kotian. That's a nice slanted, a drive with a slanted bat. So he is forcing his shots, keeping them down and keeping his wicket intact as well, and picking the flow of runs rather steadily. And now it's going to be Chandu who will face Kotian. Well, he was lured to go into his drive onto the front foot, was beaten by the awkward bounce which Kotian was able to extract from a short of a good length spot, and Chandu has been beaten. This was almost onto the popping crease, trying to york the batsman on his leg stump. This has been on driven by Chandu for a single then. He is on 10. AGRI SENA 11 in the 4th over
33 without loss. In spite of fielders being kept deeper, the opening pair of AGRI SENA 11 seemed to have chalked out a plan of upsetting the rhythm of the fielders, if not the length and line of the bowler. And this time, going for a drive, the ball takes the edge, balloons away over the keeper's head, falls short of what we used to call in school days the second wicket keeper, and not the short third man, but rather a fine third man. For a couple to Chandu, he is now on 12, and AGRI SENA 11, 26 without loss. Well, I think the most intelligent piece of batting we have seen from Chandu has been that he goes for his drive. He gives an impression to the deep pitch fielders that he is going to loft that stroke, and eventually he is just pushing it away. That seems to be the style and nature of play of Chandu. He is now on 13, and the total after 4 overs that have been sent down by RAHUL 11 side is 27 for no loss. The run rate is just marginally 0.10 short of 7 per over. It's just averaging more than 6 per over, somewhere within the vicinity of 6.8. Aslam, who began the proceedings from the Prahar end, is being brought back into his final fling, because no one is allowed to bowl more than 2 overs in this 8 overs contest. This one was a lot more in the air, but going down and then sweeps it away is Chandu, and there was none on the fine leg or long leg fence. There is one being posted on the deep backward of square. Chandu is on 15. Well, this is the penalty you pay. He was batting so effectively and so much with determination. He was avoiding the drive. He went for the drive and paid the price, as the deep pitch fielder had plenty of time for him to get underneath the ball and gobbled up what seemed to be a well-judged catch. Soni Patange was the fielder who took that catch. So Chandu has gifted away his wicket. He was batting so sensibly. Is out for 15, and AGRI SENA 11 in the 5th over of the contest are 29 for 1. New man in is Sudhir Kadam. And let's see how far he is able to use his feet and kadam while not only maintaining but stepping up the run rate. But the start given by Chandu and Bharat has been so sound and so steady that if they maintain the same rate, perhaps they will achieve a fighting score. Bharat this time whips it away down to sweeper cover. He is now into his double figures. He is on 10, and the score 30 for 1. Extras have been 2 leg buys and 3 for the penalty of chucking. So it's not 1 run for chucking, but 3 penalty runs. Progressively, the bowlers have been proving more effective, have been doing more intelligent job, and the batsmen are struggling to maintain the run rate, or rather step up the run rate. That's a very thoughtful steer to the one which was short lifting, going outside the off stump, and Kadam got on top of that one, checked the stroke, sliced it away
down to short third men. He's off the mark. He's on 1. And AGRI SENA 11, 31 for 1. That's the way to play, and that has been the style and the nature of Bharat's play. He's waiting for the ball, which has been slowing down on the pitch, as we have been telling you, and has been also keeping low, but on this occasion the ball gained fair amount of height at an amiable waist high. At a waist height, Bharat just tapped it away down to short third man and earned a single. He's on 11, and AGRI SENA 11, after 5 overs battle against RAHUL 11, are 32 for 1. It's the scoring rate is 6.40. Both Navin Shah and Yashwant Chad are equipped with the calculators. Gone are the days when you really had to tax yourself with all the mathematics that you had learned. Sunil is the new bowler from the far end. And as Mithun Chakrabarti told you earlier on, Ravi Shastri, India's vice captain on the tour of England, and during the Asia Cup, received a nasty gash, an injury on the eyebrow, perhaps the left one, during the festival match. He was playing at Tarapur today for Tata 11 against Sunil Gavaskar's 11, and that injury kept him away from attending the proceedings on the second night of this tournament. We are extremely unhappy to know about the news of his injury, and everyone here at the Subhash Nagar prays that may he recover speedily, very soon, and be fit to play for Bombay in the quarter-final match of the Ranji Trophy, against whom the board will decide. The battle is in the courts, as the tangle between Delhi and Punjab will be only decided in the meeting at Delhi. But here is, on this occasion, Vilas Kadam, though meeting the ball. His meeting hasn't lasted for a long time against Sunil, the striking bowler, as he failed to keep the stroke down. And Santosh took the catch. Who was it? Anil Sarang was the bowler. 33 for 2 is the score. Vijay Indup is the new man in, who has come in at the fall of Sudhir Kadam's wicket. Anil Sarang in again to Bharat. Vijay Indip was unsure of taking and responding the call of his striking partner Bharat. They did take the first run. They were looking for an opening for the second run, and by the time Indip, who was backing the call, he was rushing for the second run, a non-existing one. By the time he could return, he has been run out effectively. So the score is now 34 for 3. Kishan is the new man in,
and he is going for his drive, but he has the blessings of Lord Kishan, because he certainly didn't miss it. He went for his full-blooded drive without moving his left foot across to the pitch of that one. He continues to play away from his body, but he wouldn't mind about it, because his only mind has been on the art of making runs at a faster rate ever since he has arrived at the fall of Vijay Indup's wicket. And there is a consultation between Bharat and Kishan about the method that they should adopt for the remainder of the battle, which would now last for 3 more overs. After 6 overs, AGRI SENA 11 are 35 for 3. Karuna Kotian is the bowler. A bowler's back drive off the first bounce, rather. This must be a leg by. Went for a wild heave at that one, was Kishan. Who says that the broadcasters can't do the umpiring from the broadcasting box? If you are right behind the wickets, and if you know the laws of cricket, that's the one which we did apply on the last occasion. That's a characteristic cover drive from Bharat, the ball keeping low, but he put all the body weight behind that stroke. Bharat is on 14 and the score 37 for 3. What a way to get out for an absolute full toss. A wild swing at that one was the one executed by Kishan, and the ball going in the wrong direction, not on the onside, but taking the top outside edge of his bat, and the ball ballooned away in the direction of covers. So Kishan is out for 1, and the score 37 for 4. Santosh Jagtap is the new man in. The battle between Kotian and Bharat seems to be an intelligent one. He is feeding him with deliveries just outside the off stump and keeping them fairly down. 1 for the stroke, 2nd for the energetic enthusiasm, and Bharat is keeping the fortunes of his side under his control. Right-hander or you have a problem? If there are 2 right-handers, you have a problem. Left-right, Bharat is a left-hander from the beginning he is playing here. So simple chair. Concentrate na bhi. Bharat is on 16 and the total 39 for 4. Sometimes most of the batsmen do make heavy weather of the situation when things look fairly simple and straight. When you don't apply yourself to the task with all the discretion that you must display, that's a time when you either gift away your wicket or you are being tricked by the opponents. After 6 overs, or rather 7 overs, the total is 39 for 3.
The seventh over hasn't yet been completed, has just been completed rather. It's 39 for 4. Vikram Khoth is the bowler. That's a white ball. It's now 40 for 4. Vikram Khoth to Bharat. Oh no, I know this is not Bharat. Both are left-handed, that means. Bharat Indians. A single taken there by Santosh Jagtap. Two byes. 43 without 43 for 4 rather. Bharat playing with full sleeves buttoned down up to the wrists, while Santosh Jagtap wearing half sleeves shirt is the indication which my friend from Jamnagar, Navin Shah, will notice. That's a fine stroke from Bharat. Back cut down to deep backward point. They were going for the third run, and the 4 has been declared very rightly by umpire Kurup. So that has been his first 4. He's on 20 and takes AGRI SENA's team score on to 47 for 4. In fact, during the night time, the mercury today is slightly on a high side. Not only Bharat has been displaying good footwork, has also exhibited the array of strokes that he possesses, but his running between the wickets has been swiftest. Jagtap this time drives down to deep extra cover, and that was a fine tumbling attempt by Bharat to keep his wicket intact, but he just thought that he might have kept his wicket intact. But while going for the second run, he has run himself out. So he is returning to the pavilion having made 21 runs with a solitary 4 that is struck, and AGRI SENA 11 are 49 for 4. 5 rather now. Who's the new man in? Natha is the new man in. But અત્યારે જગતાપે મારે છે. After having completed the second run, that return from deep backward square leg was directly onto the stumps. And that's the completion of the over. At the end of the 8 overs quota that the AGRI SENA side received, they ended up with a score of 51 for the loss of 5 wickets, averaging 6.37 runs per over, and Rahul 11 from Parel will certainly have to knock off the runs at the asking rate
of 6.50. So those are the विल्लीचा पुढचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर असलेला अपड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता आडव्या बॅटने. चेंडू सरळ किसन खाचेकडे निघाला. धाव मात्र काय होत नाही. पुढचा चेंडू उजव्या यष्टीवर टप्पा पडला, यष्ट्यांमध्ये आला. पंचांकडे हलकस अपील केलं गेलं. पंच कुरूप आपल्या निर्णयाशी ठाम आहेत. कोणत्याही पद्धतीची खूण नाही आहे. विल्ली पुढचा चेंडू पंचांच्या डाव्या बाजूने. शशी चकलाय. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे या षटकातला विल्लीच्या आणि पर्यायाने आगरी सेनेकडून टाकल्या गेलेल्या सांघिक पहिल्या षटकातला. उंचपुरा विल्ली मारा करतोय चंद्रकांत शिंदेसाठी. सुशांत सावंत सुंदर क्षेत्ररक्षण. सुशांत सावंतचं तितके चांगली चेंडू फेक सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. पंचाने षटक संपल्याची खूण केली आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर राहुल 11 परेल या संघाची धावसंख्या झाली आहे 4 धावा बिनगडी बाद. चंद्रा खेळतोय 1 धावेवर, शशी खेळतोय 2 धावांवर आणि 1 धाव अवांतर स्वरूपात बाईच्या रूपाने धावफलकावर लागले. या स्पर्धेमध्ये काल रणजीपट्टू सपन मित्रा खेळला होता या आगरी सेना संघाकडून. आज सपन मित्राच्या जागी खेळवला जातोय तो नाथाला. त्यानं संघासाठी बऱ्यापैकी फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला होता. दीपक शहा मारा करणार आहे प्रहार एंडकडून आणि त्याला सामोरा जाणार आहे तो राहुलचा कप्तान चंद्रकांत शिंदे. दरम्यान मधल्या यष्टीवर टप्पा पडल्यानंतर लेग स्टंपच्या दिशेनं कट होणारा चेंडू फिरून मारण्याचा प्रयत्न होता चंद्रकांत शिंदेचा. चेंडू काही बॅटच्या पट्ट्यामध्ये आला नव्हता. दरम्यान चेंडू काही क्षण हवेत होता एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. अर्थातच किसन खाचेने एक प्रयत्न हलकासा करून पाहिला, परंतु त्याला यश मात्र काही आलेलं नाही आहे. चंद्रकांत शिंदे आपल्या कक्षामध्ये सुरक्षित आहे. धावसंख्या होते 5 धावा बिनगडी बाद. दीपक शहाचा चेंडू बॅकफुटवर जात एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळून एक चांगला फटका मारण्यामध्ये यश मिळालं. ते कप्तान चंद्रकांत शिंदेला 1 धावेवर समाधान शिंदेचं आणि त्याच्या संघाचं राहुल 11चं. पुढचा चेंडू शहाचा. चेंडू काही क्षण हवेत होता एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं. चेंडूवर येतोय तो खेळाडू आहे बहुधा भरत वाघेला आहे. माफ करा संतोष आहे तो. दरम्यान पुढचा चेंडू दीपक शहाचा फिरून मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू काहीसा मंद गती हलके सोडण्यामध्ये यश मिळालं. दीपक शहाला कप्तान चंद्रा चकला. चेंडू त्याच्या बॅटच्या पट्ट्यातून निसटला आणि यष्टीरक्षक विजय इंदपकडे निघाला. धाव मात्र काही होत नाही. दरम्यान पुढचा चेंडू बॅकफुटवर गेला चंद्रा आणि चेंडू कव्हरच्या दिशेनं मारलाय. 1 धाव पूर्ण होते. संतोष जगताप आहे ज्यानं अत्यंत सुंदर फलंदाजी केली आपल्या आगरी सेना संघासाठी. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 8 धावा. 48 चेंडूमध्ये विजयासाठी 52 धावांची आवश्यकता आहे राहुल 11 या संघाला. आणि आगरी सेना या संघामध्ये आज 2 बदल घडवून आणले गेले. सर्वप्रथम जो पहिल्या फेरीचा काल सामना झाला त्यामध्ये आगरी सेनेकडून रणजीपट्टू सपन मित्रा खेळला होता. त्याच्या जागी आज नाथाचा समावेश केला गेला आणि रघुच्या जागी सुशांत सावंत या डावखुऱ्या फिरकी गोलंदाजाला संघात बसवलं गेलं. हा कप्तान चंद्रकांत तोंडवळकरचा निर्णय कुठपर्यंत योग्य ठरतोय पाहायचंय. आपल्या वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं षटक. दरम्यान चंद्रकांत शिंदे चकतोय. विल्लीच्या एका ऑफ स्पिनवर चेंडू टप्पा पडला उजव्या यष्टीवर आणि फिरकी घेत
डावेष्टीच्या दिशेने निघाला. दरम्यान काहीसा पुढे सरसावला आणि खणखणीत ऑफ ड्राईव्ह केलाय कप्तान चंद्राने आणि याबरोबर चंद्राला एक धाव. चंद्राच्या संघाला पर्यायाने एक धाव. चंद्राची वैयक्तिक धावसंख्या होते 4 धावा. शशी खेळतोय 4 धावांवर. अवांतर धावांची संख्या आहे 1, जी बाईच्या स्वरूपात धावफलकावर लागली आहे. पुढचा चेंडू विलीचा एक चांगला ऑफस्पिन पद्धतीचा हा चेंडू म्हणावा लागेल. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू हलकेच फिरकी घेत लेग स्टंपच्या दिशेने निघाला. पुढचा चेंडू उंची दिलेला. चेंडूने बॅटच्या बाहेरची कड घेतली. सुशांत सावंत गचाळ क्षेत्ररक्षण करतोय. पाहायचं काय होतंय ते. आणि एका धावेवर समाधान मानलंय 2 फलंदाजांनी, चंद्रकांत शिंदे आणि शशी यांनी. दोन्ही उजव्या हाताचे सारख्या उंचीचे फलंदाज आहेत चंद्रा आणि शशी. शशी आक्रमक आहे तर चंद्रा तंत्रशुद्ध आक्रमक आहे. दरम्यान चंद्रा चकतोय, पंचांकडे विस्मयकारक नजरेने पाहतोय. या षटकातला पुढचा चेंडू टाकणार आहे विल्ली. आणि हा ऑफ स्टंपवर असलेला चेंडू ऑन ड्राईव्ह केलाय. दीपक शाह चेंडूवर येतोय. चेंडू अडवेपर्यंत एक धाव पूर्ण होते. 3 षटकांची समाप्ती झाली आहे. 11 धावा धावफलकावर लागल्यात 0 गड्याच्या मोबदल्यात. चंद्रा खेळतोय 5 धावांवर आणि त्या 5ही धावा एकेरी स्वरूपात आहेत. तर शशी खेळतोय 5 धावांवर, त्यामध्ये एक दुहेरी धावांचा फटका आहे. आणि आता आगरी सेनेचा हुकमी एक्का समजला जाणारा किसन खाचे मारा करणार आहे प्रहार एंडकडून आणि आमच्या विरुद्ध दिशेकडून. 8 ते 9 पावलांची धावपट्टी आहे किसन खाचेची. मंदगती फिरकी मारा करतो किसन खाचे आपल्या संघासाठी. आणि हा स्ट्रेट ड्राईव्ह ठीक गोलंदाजाच्या डोक्यावरून सीमारेषेकडे जाणारा तितकी चांगली चेंडू फेक करण्याचा प्रयत्न केला होता नाथाने, जो रघुच्या जागेवर संघामध्ये बसवण्यात आलाय. धावसंख्या होते 13 धावा बिनगडी बाद. चंद्रा काहीसा हुलकावणी देतोय गोलंदाज किसनला. पावित्र्य घेतल्यानंतर मागे सरसावतोय आणि गोलंदाज किसन खाचेचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करतोय. पाहायचंय तो या डावपेचामध्ये कुठपर्यंत यशस्वी ठरू शकतो. किसन खाचे पंचांच्या डाव्या बाजूने या षटकातला तिसरा चेंडू. उंची दिलेला, वेगामध्ये परिवर्तन असलेला आणि स्वतःच्याच गोलंदाजीवर अत्यंत सुंदर फॉलो थ्रू मध्ये निघत, म्हणजे गोलंदाजीच्या ओघामध्ये निघत आपला पाय आडवा घालत चेंडूची गती कमी केली. चेंडू अडवला गेला, परंतु एक धाव मात्र काही किसन अथवा यष्टीरक्षक विजय इंदप रोखू शकलेले नाही आहेत. शशी सामोरा जातोय आणि शशीचा हा खणखणीत उंचावरून केलेला ऑफ ड्राईव्ह कप्तान चंद्रकांत तोंडवळकरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. आणि पहिल्या सामन्याचा हिरो पहिल्या फेरीमध्ये जो आग्री सेने राहुल 11चा हिरो ठरला होता तो शशी झेलबाद होतोय किसन खाचेच्या गोलंदाजीवर. कप्तान चंद्रकांत तोंडवळकर द्वारा लॉंग ऑफ सीमारेषेवर आणि तंबूत परततोय. याबरोबर धावसंख्या झाली आहे एक गडी बाद 14 धावा. नवीन आलेला फलंदाज आहे विक्रांत खोतला आज बढती मिळाली आहे. दरम्यान अर्थात किसन खाचेचा हा नकारार्थी चेंडू काही पंच बाबरेकरांच्या नजरेतून सुटलेला नाही आहे. त्याने आपले दोन्ही हात मैदानाच्या दोन्ही दिशेला, म्हणजे ऑफ साईडला आणि ऑन साईडच्या दिशेने मोकळे केले आणि आमच्या दिशेने वाईडची खूण केली. अत्यंत सुंदर आणि आक्रमक फटका, तितकंच झुंजार क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न केला कप्तान चंद्रकांत तोंडवळकरने आणि या फटक्यावर चौकार मिळतोय कप्तान चंद्रा शिंदेला. याबरोबर चंद्रा शिंदेची धावसंख्या होते आमचे गुणलेखक मिश्रा आणि त्याच्या धावसंख्येची मांडणी करतायत. त्याची धावा आहेत 12 धावा, माफ करा.
त्यामध्ये एक चौकार आहे. पुढचा फटका लॉंग ऑफच्या दिशेनं घरंगळत जाणारा. तोंडवळकर चेंडूवर येतोय आणि चेंडू आडवेपर्यंत एक धाव पूर्ण होते. धावसंख्या झाली आहे 20 धावा 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर. प्रति षटकामागे 5 धावांची सरासरी राखलेली आहे. राहुल 11च्या फलंदाजाने एक फलंदाज तंबूत परतला आहे, तो म्हणजे शशीच्या रूपाने. चंद्रा खेळतोय 12 धावांवर. विक्रांत खुतला अद्याप आपलं खातं उघडायचं आहे. बाद झालेला फलंदाज आहे शशी 5 धावांवर. किसन खाचेच्या माऱ्यावर तोंडवळकरद्वारा झेल बांधून तंबूत परतला. त्यावेळेला संघाची धावसंख्या होती 14 धावा आणि 20 धावांमध्ये 2 अवांतर धावा आहेत, एक वाईटच्या स्वरूपात आणि एक बाईच्या स्वरूपात. पुढचं समालोचन करतील हिंदीतून माझे सहकारी हितेश पंड्या. संजू वैद की ये गेंद ऑप्शन से बाहर थी, उसे उठा दिया था, एक आसान सा कैच जो कि लॉन्ग ऑफ पर छोड़ा है और इस बीच बैट्समैन ने 2 रन बनाए. स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर. संजू वैद जो कि राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे, करीब 4-5 गज का रन लेते हुए उसकी गेंदों का सामना करेंगे चंद्रकांत. ये गेंद अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच थी, उठती हुई गेंद आ गए, उसे खेला है बॉलर ने पॉलिथीन में गेंद को फील्ड किया और रन आउट. विक्रांत जो कि बाहर निकल चुके थे उसको बॉलर ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करके रन आउट किया. इस तरह से ये दूसरा विकेट. बाईस रन पर 2 विकेट. नया बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं सुनील पतंगे. संजू वैद जो कि बॉलर में उसने गेंद को फील्ड किया और विक्रांत जो कि बाहर निकल चुके थे उसको रन आउट कर दिया. इस तरह से स्कोर 22 रन पर 2 विकेट. अब नए बैट्समैन आए हैं सुनील पतंगे. इस बीच संजू वैद चंद्रा को ये गेंद लेग स्टंप के ऊपर थी, फुल टॉस थी, उसको घुमाना चाहते थे, पूरी तरह से गेंद की लाइन पे नहीं आ पाए. गेंद वहीं खड़ी रही. विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं. संजू वैद जो कि काफी छोटा रन अप लेते हैं, करीबन 3-4 गज का, उसकी गेंदों का सामना कर रहे चंद्रा जो कि कप्तान के रूप में खेल रहे हैं. इस बीच ये गेंद लेग स्टंप के ऊपर आ गया कर उसे घुमा दिया स्क्वायर लेग अंपायर की बगल की ओर से. वहां फील्डर मौजूद है. बैट्समैन 1 रन के लिए जा रहे, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा. काफी अच्छा शॉट था लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर. 1 ही रन. स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन. संजू जो कि लगातार गेंदों को लेग स्टंप के ऊपर फेंक रहे हैं. सुरेश भाई जो कि अंपायर के रूप में है इस बीच तैयार. संजू वैद राइट आर्म और विकेट. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और बिना गेंद की लाइन में आए, उसे घुमाना चाहे. आसान सा कैच विकेट कीपर के ग्लव्स में. इस तरह से सुनील पतंगे जो कि कोई भी रन नहीं बना पाए, आउट होकर वापस आ रहे पेवेलियन में. ऑफ स्टंप से काफी बाहर बिना गेंद की लाइन में आए, उसे घुमाना चाहा और एक आसान सा कैच जो कि विकेट कीपर ने ले लिया. और इस तरह से ये तीसरा विकेट संजू के रूप में, सुनील पतंगे के रूप में आउट होकर वापस आए. स्कोर है अभी तक 23 रन. इस मैच को जीतने के लिए 51 रन बनाने हैं और ये $52 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए, जो कि ये 5वां ओवर चल रहा है. काफी संघर्षपूर्ण क्रिकेट यहां पर. संजू वैद और ये गेंद
ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए गेंद को बिना गेंद की लाइन में खेलना चाहा, पूरी तरह से चूके गेंद विकेट कीपर के ग्लव में। इस तरह से ओवर की समाप्ति। दोनों अंपायर के बीच कुछ मशवरा चल रहा है। संजू वैद का ये पहला ओवर था, इस ओवर में उसने 5 रन दिए। चंद्रकांत जो कि कप्तान के रूप में बैटिंग करे, 16 रन अभी तक उसका स्कोर हुआ है। इस मैच को जीतने के लिए 52 रन बनाने हैं। 29 रन रिक्वायर्ड इन 3 ओवर्स। 9.666 प्रति ओवर रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है। तो इस बीच तैयार किशन फेस टू चंद्रकांत। किशन जो कि करीब 6-7 गज का रनिंग लेते हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को बिना गेंद की लाइन में उठाया है और एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में। इस तरह से चंद्रकांत जो कि आउट होकर वापस आ रहे हैं पेवेलियन में। इस बीच उसने 16 रन बनाए हैं। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, बिना गेंद की लाइन में उसे उठा दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पर। वहाँ जो कि फील्डर मौजूद जिसने एक आसान सा कैच आसान क्रीज से ले लिया। इस तरह से चंद्रकांत आउट होकर वापस आ रहे पेवेलियन में। काफ़ी अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन किया। इस बीच उसने 16 रन बनाए। इस मैच को अगर जीतना है तो करीबन 9 रन प्रति ओवर रन बनाने होंगे। चौदह रन पर पहला विकेट गिरा था, 22 रन पर दूसरा विकेट, 23 रन पर तीसरा विकेट और लगातार चौथा विकेट भी 23 रन पर गिरे। ये 6वां ओवर चल रहा है। इसके बाद 2 ओवर और फेंके जाएंगे। इस मैच को अगर जीतना है तो प्रति ओवर 9 रन बनाने होंगे। काफी संघर्षमय क्रिकेट। इस बीच तैयार और ये गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 6 रन के लिए बहुत ही खूबसूरत शॉट। करुणाकर कोटियन जो कि अभी अभी आके अपने आक्रामक मूड का प्रदर्शन किया। ये गेंद आ गए उसे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। वहां के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। 6 रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट। अपने आक्रामक मिजाज को प्रदर्शित करते हुए पहली गेंद पर 6 रन और 1000 रुपये का इनाम मिलेंगे उसको, क्योंकि जो भी बैट्समैन यहाँ पर सिक्सर लगाएंगे उसके लिए 1000 रुपये का इनाम है। इस तरह से ये कोटिया का ये पहली गेंद पर पहला सिक्सर, बहुत ही अच्छा शॉट, आज का देखने लायक शॉट लॉन्ग ऑफ। और ये सेकंड 6 है जो कि इस टूर्नामेंट का दूसरा 6। पहला अजीत कुतरा ने मारा था, गणेश गली के प्ले अजीत कुतरन ने लगाए थे गणेश गली के टीम में से, और अभी अभी कोटिया ने लगाए। इस बीच तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद फुल टॉस थी, उसको आगे अगर एक्स्ट्रा कवर खेले। वहाँ फील्डर मौजूद है लेकिन बैट्समैन 1 रन के लिए जा रहे। वहाँ से मिस फील्डिंग हुई और ये 4 रन, जहाँ 1 ही रन मिलना चाहिए था वहाँ मिस फील्डिंग की वजह से 4 रन। कोटिया जो कि काफी आक्रामक मूड में पहली गेंद पर 6 रन, दूसरी रन पर 4 रन। इस तरह से इस प्रति ओवर 10 रन का जो संघर्षमय क्रिकेट है उसको जारी रखते हुए कोटिया चुनौती को कबूल करते हुए 10 रन बना लिए है। किशन जो कि गेंदबाज है कोटिया के सामने। इस बीच किशन तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद आगे आकर उसे खेला है जो कि ओवर पिच गेंद थी। 1 ही रन से संतुष्ट गेंद पॉइंट की ओर गई। वहां फील्डर मौजूद है जिसने गेंद को फील्ड किया। 1 रन कोटिया को। कोटिया का स्कोर बढ़ तो 11 रन। 34 रन बने हैं, 52 रन बनाने इस मैच को जीतना है। तो इसके बाद और 2 ओवर फेंके जाएंगे। प्रति ओवर 10 रन बनाना है। इस बीच किशन तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंद बैट्समैन आ गए, उसे खेला है डीप फाइन लेगी और वहां फील्डर मौजूद है लेकिन बैट्समैन को 2 रन लेने से नहीं रोक सके। स्कोर अब बढ़ तो 36 रन। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, मिडल स्टंप से लेग स्टंप की और बाहर निकलते हुए गेंद को बैट्समैन ने बैकफुट पर जाकर डीप फाइन लेग की और खेल दिया। 2 रन। स्कोर अब बढ़ तो 36 रन। 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच किशन
राइट आर्म ओवर द विकेट, करीब 5-6 गज का रनिंग लेते हुए। ये गेंद लेग स्टंप के ऊपर थी, उसको आगे आकर खेला एक मिड ऑफ की ओर जहां फील्डर मौजूद है, लेकिन बैट्समैन को एक रन लेने से नहीं रोक सके। स्कोर अब बढ़ता हुआ 37। इस मैच को जीतने के लिए 52 रन बनाने, प्रति ओवर 10 रन बनाने होंगे, जो कि कोटिया काफी आक्रामक मूड में अपना बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। किशन की इस ओवर में 14 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 37 रन बने हैं। इस मैच को जीतने के लिए 52 रन बनाने हैं। अभी और 2 ओवर फेंके जाएंगे। इस ओवर में 14 रन बने हैं किशन की, जिसमें एक शानदार 6 और शानदार 4 शामिल है। अभी 2 ओवर में 15 रन बनाने, प्रति ओवर 7.5 दशमलव से खेलना होगा बैट्समैन को। दीपक शाह जो कि बॉलर के रूप में आए हैं अपनी मैच की 7वीं ओवर लेकर। काफी अच्छा संघर्षमय क्रिकेट यहां पर। दीपक शाह जो कि अपना दूसरा ओवर लेफ्ट हैम राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद और बैट्समैन क्लीन बोल्ड। गेंद थोड़ी सी नीची रह गई, गेंद की बिना लाइन में उसे खेलना चाहा, पूरी तरह से बीट हुए गेंद स्टंप को लेती हुई। कोटिया जो कि अभय आउट होकर वापस आ रहे हैं पेवेलियन में। 7वां ओवर चल रहा है। इस मैच को जीतने के लिए 52 रन बनाने हैं। 37 रन बन चुके हैं। नए बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं सुनील इंदुरकर। दीपक जो कि लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर अपनी दूसरी ओवर की पहली गेंद पर उसे सफलता मिली। काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। करीबन 3-4 गज का रनिंग लेते हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। उसकी गेंदों का सामना करेंगे नए बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं सुनील, अपनी फील्ड को सजाते हुए। अपनी फील्डिंग से अभी वो संतुष्ट नहीं है। फील्डर जो कि डीप कवर पे खड़े थे उसे थोड़ा शॉर्ट कवर पे बुला रहे हैं, और मिड ऑन है जो डीप अप बना दिया है, और एक डीप मिड विकेट भी रखा है। इस बीच दीपक तैयार, उसकी गेंदों का सामना करेंगे सुनील जो कि बाएं हाथ के बैट्समैन है। इस बीच तैयार दीपक लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट सुनील को, और इस गेंद को बिना गेंद की लाइन में उठाना चाहा। किस्मत वाले रहे कि गेंद ने उसका भीतरी किनारा नहीं लिया। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। इस मैच को जीतने के लिए 52 रन बनाने हैं। 7वां ओवर चल रहा है। प्रति ओवर 7.5 दशमलव रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। काफी संघर्षमय क्रिकेट यहाँ पर। दीपक जो कि अपनी दूसरी ओवर, इस मैच की 7वीं ओवर लेकर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। करीब 3-4 गज का रनिंग लेते हुए उसकी गेंदों का सामना कर रहे नए बैट्समैन सुनील। मिड विकेट को थोड़ा सा डीप भेजा जा रहा है, और इस बार भी बिना गेंद की लाइन में आए उसे अपनी जगह पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश में पूरी तरह से बीट होते हुए गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। दीपक शाह जो कि काफी जिम्मेदार पूर्वक बॉलिंग कर रहे। इस बीच दीपक तैयार सुनील को, और इस बार सुनील ने स्ट्रेट ड्राइव लगा दिया है 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। थोड़ी सी और पिच थी, सुनील आ गए, उसे घुमा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। मैच काफी रसपूर्वक बनता जा रहा। स्कोर अब बढ़ता हुआ 41 रन। इस मैच को जीतने के लिए और 11 रन बनाने। इस ओवर के बाद एक ओवर और फेंका जाएंगे। 7 गेंदें और फेंकी जाएंगी, और 8 गेंदें और फेंकी जाएंगी, और उसमें 11 रन बनाने अगर इस मैच को जीतना है तो। 5 विकेट के नुकसान पर 41 रन। काफी संघर्षमय क्रिकेट यहां पर। इस बीच सुनील जो कि नए बैट्समैन के रूप में आए, अपने आक्रामक मूड का प्रदर्शित करते हुए तीसरी गेंद पर उसने बहुत खूबसूरत 4 रन लगाए। इस बीच इस बार भी उठा दिया है गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास। वहां फील्डर मौजूद है, फील्डर के हाथ में गेंद, और ये कैच
बहुत ही अच्छा कैच। किशन ने इस बार कोई गलती नहीं की, गेंद की लाइन में आए, आखिर वक्त पर अपना हाथों में गेंद को झपटा और जो कि सुनील काफी अच्छा खेल रहे थे उसको पेवेलियन की ओर जाने के लिए मजबूर किया। सुनील 4 रन बनाकर वापस आ रहे पेवेलियन में। इस मैच को जीतने के लिए और 11 रन बनाने हैं। अग्रसेन, राहुल 11 को इस मैच को जीतने के लिए और 11 रन बनाने हैं। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, काफी संघर्षमय क्रिकेट यहां पर। नए बैट्समैन के रूप में आए हैं सुरेश, जो कि दाएं हाथ के बैट्समैन है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, करीब करीब 3-4 गज का रनिंग लेते हुए ये गेंद और ये बोल्ड। बिना गेंद की लाइन में अपनी जगह पर खड़े रहकर बल्ले को घुमाना चाहा। गेंद जो कि स्टंप को लेती हुई क्लीन बोल्ड आउट होकर वापस आ रहे। काफी संघर्षमय क्रिकेट। 6 गेंद में 11 रन। अंतिम ओवर में अगर इस मैच को जीतना है तो 11 रन बनाने होंगे। पहला विकेट जो कि 14 रन पर गिरे थे, दूसरा विकेट 22 रन पर। इस ओवर में जो कि 3 विकेट मिला है दीपक को, बहुत ही जिम्मेदार पूर्वक बॉलिंग की है। इस ओवर में 3 विकेट लेकर उस मैच का कुछ पल्ला अपनी ओर भारी करते हुए दीपक अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं नए बॉलर। संजू जो कि अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं। इस ओवर में 11 रन बनाने अगर इस मैच को जीतना है तो काफी संघर्षमय क्रिकेट। स्कोर अब बढ़ता हुआ 43। पहली गेंद पर 2 रन। इस मैच को जीतने के लिए और 9 रन बनाने होंगे। 5 गेंद 9 रन। राजू ने, और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर और अंपायर का इशारा इस बीच वाइड का। एक और रन बढ़ता हुआ। जहां तक बॉलिंग का सवाल है, हर एक बॉलर को अपने कम से कम गेंदें बाहर फेंकी जाए तो अच्छा रहेगा। 7 रन और चाहिए अगर इस मैच को जीतना है तो। और इस बार जबरदस्त अपील एलबीडब्ल्यू, लेकिन हम बैट्समैन जो कि आगे अगर खेल रहे थे, एक और रन लेग बाई का। स्कोर अब बढ़ता हुआ 45। सात रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जीतने के लिए 7 रन बनाने होंगे। संजू इस बीच तैयार, राइट आर्म ओवर विकेट, करीब 3-4 गज का रनिंग लेते हुए असलम को। और इस बार ओवर पिच गेंद आ गए, उसे घुमा दिया है डीप मिड ऑन के, और वहां फील्डर मौजूद है, गेंद को फील करे। इस बीच बैट्समैन ने 2 रन के लिए भाग चुके थे। स्कोर अब बढ़ता हुआ 47। थोड़ी सी ओवर पिच आ गए, बैट्समैन उसे घुमा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के, और वहां फील्डर मौजूद थे, लेकिन बैट्समैन को 3 गेंदे और 5 रन। काफी संघर्षमय क्रिकेट यहां पर, बहुत ही अच्छा क्रिकेट आज सभी दर्शकों को देखने के लिए इस बीच तैयार। और ये गेंद लेग स्टंप के ऊपर उठती हुई गेंद, और इस बार विकेट कीपर गेंद को अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। 1 रन के लिए बैट्समैन भाग चुके। ये स्कोर 22 का 1 रन अतिरिक्त रन। स्कोर अब बढ़ता हुआ 48 रन। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, जबरदस्त क्रिकेट यहां पर। 2 गेंदे और 4 रन। 2 गेंद में 4 रन बनाने होंगे बैट्समैन को। बहुत ही अच्छा क्रिकेट। इस बीच तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट संजू। और इस गेंद को उठा दिया हवा में, वहां फील्डर मौजूद है, गेंद के नीचे आ रहे और एक आसान सा कैच ड्रॉप। बहुत ही अच्छा चांस था। 2 रन भाग चुके बैट्समैन। एक आसान सा कैच जो कि हाथ में आकर गिर गया।
बहुत ही अच्छा कैच ड्रॉप हुआ। इस तरह से स्कोर अब बढ़ता हुआ 50 रन। अंतिम गेंद और 2 रन। अंतिम गेंद में 2 रन बनाने होंगे बैट्समैन को। अंतिम गेंद और 2 रन। सुरेश जो कि काफी आक्रामक मोड में है, हर एक गेंद के ऊपर झटके लेते हुए। फील्डिंग में अभी कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं कप्तान। सभी दर्शकों में एक जिज्ञासा है कि कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। बहुत ही अच्छा मैच आज का ये। अंतिम गेंद, अगर इस मैच को जीतना है तो 2 रन। इस वक्त ठीक सुशील जोशी जी की याद मुझे आ रही है कि जो उन्होंने एक शब्द अभी अभी कहा था कि जब फील्डर सुस्त होते हैं तो बल्लेबाज चुस्त बन जाते हैं, और वही दोहरा गया कि जैसे ही करुणाकर कोटियान ने सीक लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का लगाया और बाद में कवर बाउंड्री के ऊपर चौका लगाया और फौरन ही मैच का कुछ रुख ही बदल चुका है। हार या जीत इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, लेकिन जहां तक मैचों का सवाल है, ये मैच जो कि काफी रसपूर्वक चल रहा है। अंतिम गेंद और 2 रन। बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पर आज सभी दर्शकों को देखने को मिला। मैच जीतने के लिए 2 ही रन मांगते हैं बैट्समैन। इक्वल, अगर एक ही रन बनेगा या इक्वल होएगा तो इस मैच को हार जाएंगे बैटिंग करने वाले टीम। 2 ही रन चाहिए इस गेंद पर। फील्डिंग की सजावट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक डीप पॉइंट है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, और इस गेंद को घुमा दिया है डीप मिड बाउंड्री के बाहर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, और इस मैच को जीत लिया है। खूबसूरत शॉट, बहुत ही अच्छा क्रिकेट, बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। मैदानावरचे प्रेक्षक आहेत त्यांनी ताबडतोब आपल्याला जागा घ्यायची आहे, कृपया मैदानात घुसू नका। सभी दर्शकों से दरखास्त है कि पिच की तरफ न आए। ये सच बात है कि एक खुशी का मौका है, और इस खुशी के मौके को अपनी जगह पर खड़े रहकर आप मनाइएगा।